Hello friends, welcome to our new series Finance Concepts and CFA Economics. Today we are going to discuss very important concept of break-even points, shutdown and minimum efficient scale. So firms, as you all are aware, firms is nothing, it's just a business. Any business, either is very small or big. It's a bakery in your in your city or a company like Tesla all comes under firms or businesses. But when does a break even points comes for these businesses? When they need to shut down, how they decide, look, it's a time we can't operate, we need to shut down. What's that point? And what's their minimum efficient scale? So first and foremost, we are going to discuss cost for any business and how they divide those costs. First thing, for businesses, there are major two type of cost. First is a fixed cost and another is a variable cost. As the name says, fixed cost. These costs are fixed and doesn't change when they change their manufacturing capacity. It remains same. Either it's a company or a service company. These costs will always stay there. Like if I take an example of bakery, to start a bakery, they need a place. Either they will buy it or rent it. Even if they haven't started the product, they really need that place, right? And if they're renting it, they are taking it on lease, they need to pay rent for it. And that rent doesn't defined by their production. It has to be there. Again, same concept goes for plants or you say machinery and equipment. If they need to manufacture something, if they need to bake something, they need to have machinery, equipment. That is another a fixed cost. Now you will say, like, okay, they buy machinery or equipment, but they are not going to, they will stay for their longer. Yes, exactly. There is always a fixed lifetime for any equipment, or if you say it's a plant. But how you will decide then what type of annual fixed cost for those plants? See, mostly for plants there are two type life. Either it has life of years, like okay, you buy a machinery for baking and that machinery has years of life. If they buy it for 100,000 rupees, like 1 rupees, and it's going to run for 5 years, so for this year the annual fixed cost will be 1 lakh divided by 5, 20,000 rupees. Another case, when the life of of the machinery depend on the production, like okay, this is a bakery machine and can produce 5,000 cakes in total. After 5,000 cakes, that need to be rebuilt or need a maintenance. So what you will do? You can figure it out what is the fixed cost per unit. If it was for 1 lakh divided by 5,000, so it's 20 rupees per cake will be the fixed cost. These are the fixed cost. That doesn't change. That doesn't depend on how much you are going to produce. Now the next thing comes variable cost. Variable costs are all those costs which depend on how much that company, that business is going to produce. Assume raw material. On what raw material depend? How much you are going to produce. If you are going to make one cake, you just need little bit of raw material. But if you are going to make 100 cakes, you need more raw material, more flour, sugar, cream, milk, all these raw material, whatever it is. Whatever example you take, raw material, the material which is used to produce that particular product will variable cost. Again, you need employee to run the business. That is variable cost. That depend how much you are manufacturing. If you are making more cake, obviously, then you will need more employees to take care of that. But if you are making less, maybe you need less employees to take care of that. Then you are running your machinery. If you are running your machinery, what you will be needing? You will need either it can be petrol or diesel, or you need electricity. So that utility cost is again the variable cost. Now you know the difference between fixed and variable cost. You know one another type of cost as well, that is semi variable. In that, obviously we are not going to define that in detail because this is quite in less in amount, and in any of the subject it's not discussed in detail.
But when it comes to semi-variable cost, like assume if you're a factory, obviously there will be some corporate head. Even though it's not running, you might still be need one employee. Yeah, you can in between of variable and fixed. In the same way, for utilities cost, even though you are not producing, you still need utility, electricity for that particular factory, that electricity connection. So there are few, but little, which fall under semi-variable bucket. But majorly, you have to focus on fixed cost and variable cost. We are going to take an example to understand how does it define. I have put few things here. What is cost and what is variable cost? As I told you, I have taken the example of bakery for fixed cost and variable cost. So as I said, fixed cost is rent, plant, corporate overhead. All these are fixed cost. If the rent of the bakery is lakh, plant machinery equipment cost 10 lakhs and corporate 1 lakh. And this particular plant, I define it based on unit produced. So if I assume this can produce 5,000 unit, so the cost per unit, the fixed cost per unit per cake is around 200 per unit. So if I talk about fixed cost, how you will define rent plus plant plus corporate. But you always need to take care this plant cost. You need to think about, are you talking about, when you talk about variable cost and plant and fixed cost, there are three types you can discuss this. The first, per unit basis. Okay, fixed cost per unit basis plus variable cost per unit basis is equal to total cost. Second, you can think of fixed term like per annum basis. I'm saying एक साल में, in 1 year, how much will be fixed cost and how much will be variable cost in 1 year. The third type is lifetime. If this plant to survive for 5 years or can make 5,000 units, you are talking about the full term of this particular project. After this, after 5 years, this plant need to be replaced. The company need new capex. When the company need new capex, there will be new, we can start the new project. So here I'm going to discuss based on per annum basis. Okay, so when I'm going to discuss per annum basis, we need to think how much cake this bakery is producing every year, right? You need to understand that part. Assume this bakery is making 1000 cakes per annum, 1000 cake per annum, and the plant is 10 lakh for 5,000 unit, 200 per unit. They are making 1000. How much it will cost? It will cost them in that year 2 lakh. 200 multiplied by 1000, it will cost them 2 lakh. Now the total fixed cost for this bakery is 2 lakh for plant, 1 lakh for rent, and for corporate overhead. Corporate overhead, who are they people? You owner here, you can say those people who had done set up for this. Obviously, you need all that cost. So that's some fixed cost. Even that's the fixed cost before starting their production. Now, because they are building 1000 cake, raw material cost per unit is 300 rupees. एक केक बनाने की रॉ मटेरियल है 300 यूनिट है. So we can multiply 300 multiply by 1000. So raw material cost is 3 lakh. We are saying employee cost per annum is 2 lakh. So employee cost 2 lakh and utility is 2 lakh again. So this is the variable cost comes to 7. Now this particular bakery have fixed cost of 4 lakh and variable cost of 7 lakh. एक साल में per annum this bakery is spending 11 lakh. So now when we say what is the break-even point? So break-even point is the point where the company neither making profit nor making loss. ना तो प्रॉफिट बना रही हो ना लॉस बना रही हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और इनकम बराबर हो, तब
वो कंपनी गिवन पॉइंट पे होती है। अब यहाँ हमने देखा कॉस्ट कितनी है, 11 लाख है, तो इनकम भी कितनी होनी चाहिए, 11 लाख की इनकम होनी चाहिए, तब ये बेकरी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी। अब 11 लाख कमाने के लिए इस बेकरी को क्या करना पड़ेगा, ये बेकरी 1000 यूनिट बनाती है केक की, तो क्या करना पड़ेगा, इसे अपने केक का प्राइस कितना रखना, इसे अपने केक का प्राइस 1100 रुपए रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 1100 रुपए। 1100 when they multiply 1100 multiply 1000 it comes to 11 lakh rupees. This is the point where the bakery reach on break even point. Okay, so now we come to the second concept. Hope you understand break even point. No profit, no loss, equal to income, expenses equal to income, and what is the cost, variable plus fixed, both cost you have to, you don't need to forget what type of capex they have, what type of opex they have, everything need to be included. Hope you understand capex and opex part. This plant, this is capex, everything which can be run more than 1 year is comes under capex. जो आपने खरीदा वो उसी साल में अगर कंज्यूम नहीं किया, वो आगे भी उसका यूटिलाइज होने वाला है, वो कैपेक्स कहलाएगा। एंड व्हाट इज ओपेक्स, ओपेक्स इज इसी साल में खरीदा, अभी खत्म कर रहे हैं, एम्प्लॉइज इस साल में वो अभी काम कर रहे हैं, उनका पैसा अभी है, इसी साल में देना, इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट यू कैन कैपिटलाइज इट फॉर नेक्स्ट ईयर. So we are going to have a separate video on capex and opex, which is very important to understand business. But for now you have to understand fixed, variable, cost and income both part. So now let's come to the next concept, which is shutdown. अभी ये तो बोल गया भाई ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट तो तब होगा जब ना कंपनी प्रॉफिट बना रही हो ना लॉस. अब शटडाउन कंपनी को कब पता चलेगा, अब इस कंपनी को, इस बेकरी को, इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी हो मुझे हमेशा लॉस ही होता रहना है, इट्स बेटर टू शट डाउन एंड मूव ऑन. वो कौन सा पॉइंट आता है, उस पॉइंट को इकोनॉमिक्स में बहुत सही तरीके से डिफाइन किया है. जब हम शट डाउन के बारे में सोचें, वी फॉरगेट अबाउट अवर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को भूल जाएं, किस पे फोकस करें, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे फोकस करें. अब इस केस में वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 7 लाख रुपीस थी, और ये कंपनी की ये बेकरी कितने केक बना रही थी, 1000. इफ आई राइट 7 लाख डिवाइडेड बाय 1000, सो पर केक के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 700 रुपीज. कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, 700 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है. मैंने ना तो उसमें मशीनरी लगाया, ना रेंट लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ वो कॉस्ट जो इस केक को बनाने में लग रही है, सिर्फ उस कॉस्ट को इंक्लूड किया. इंक्लूडेड द कॉस्ट विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर दैट केक, जिसमें रॉ मटेरियल है, एम्प्लॉइज हैं जो लगे उस केक को बनाने में, एंटिटीज है. वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ इंक्लूड किया. अब अगर ये बेकरी को एक केक बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 700 रुपए आ रही है, बट अगर ये बेकरी इसको 700 से कम में बेचे, 700 रुपए से भी कम में ये बेकरी बेच पा रही है, इस केक को 600 रुपए में बेच पा रही है, कितने में, 600 में. हर केक पे कितना रुपीज लॉस कर रही है, 100 रुपीज लॉस कर रही है. अगर कोई भी बिजनेस अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाता, कौन सी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाता, तो दैट्स द टाइम ऑन द बिजनेस. अगर आप जो वेरिएबल कॉस्ट लगा रहे हो, जो रॉ मटेरियल लगा रहे हो, जो एम्प्लॉइज लगा रहे हो, उनकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं बिजनेसेस के लिए, वो एक ऐसा पॉइंट है जब उन्हें बंद कर देना चाहिए. सो दैट्स द कंसेप्ट फॉर शटडाउन. शटडाउन में हम ये नहीं बोलते कि भाई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर कीजिए, ठीक है, आप आपकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो विद टाइम, with economy of scale, with demand supply, you might recover your fixed cost later on. पर अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट, जो पैसा आज डाल रहे हो उसको बनाने के लिए, वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे, तो दैट्स द शटडाउन. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट कम्स टू
minimum efficient scale. That is again quite an important, and that's important from the perspective of economics and business both. MES, मिनिमम एफिशिएंट स्केल। मिनिमम एफिशिएंट स्केल का होता है कि कितना प्रोड्यूस करे कम, कोई भी बिजनेस कितना प्रोड्यूस करे कि उसकी जो कॉस्ट है वो क्या रहे, मिनिमम रहे। ऐसा स्केल जिसे प्रोड्यूस करने पर कंपनी को कॉस्ट मिनिमम आए। और जब हम कर रहे हैं वो कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या आए, मिनिमम आए, कम से कम आए। मान लीजिए आपने एक बेकरी लगाई, ओके, कि उसमें इतनी मशीनें लगाई आपने कि वो एक साल में 2000 केक बना सकती हैं। कितने केक बना सकती है, 2000 केक बना सकती है। ठीक है, 2000 केक बना सकती हैं और एक साल, और जो आपने प्लांट लगाए थे उनकी कैपेसिटी थी 5 साल तक चलने की। आपने 10 लाख रुपए के क्या लगाए थे, मशीनरी लगाई थी। तो एक साल के लिए कितना कॉस्ट हो गया अगर आप उसको डेप्रिशिएट करें, 2 लाख। नाउ यू डिवाइड 2 लाख बाय 2000, दैट 100 रुपीज, 100 रुपीज पर यूनिट आ गया, 100 रुपीज पर यूनिट। पर अगर ये बेकरी 2000 की जगह सिर्फ 1000 केक बनाए, सिर्फ एक ही बनाए, तो उसे कॉस्ट कितनी पड़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट 200 रुपीज पर यूनिट। In the same way, when we make it higher scale, your variable cost also decrease. But then there is one point comes. Okay, that is units, production unit, and that is your cost. When you are producing just one, your cost will be very high. But as you increase your scale, if I'll say ये 1 और ये 100 यूनिट और ये कॉस्ट यहाँ पे 0, 5, 15. Okay, as you increase your scale, your cost will keep decreasing, but there will be one point, at that point the cost will start increasing. The reason, there can be few reasons. The first reason can be, here the plant has reached on its maximum capacity. प्लांट की कैपेसिटी सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनाने की है, उससे ज्यादा अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो यू हैव टू पुट मोर कैपेक्स और यू हैव टू डू सम अदर अरेंज, विल इंक्रीज योर कॉस्ट। द सेम वे from variable cost as well, like you existing arrangement, you have 10 employees, and until here these 10 employees are enough to produce. If you want to produce more, you need one more employee to handle these things. So in that scenario, your variable cost will increase, and it might increase more than how much you are earning from that particular product. So this is the point which is called minimum efficient scale, where the cost produce, the scale, मान लीजिए this is 90, the 90 यूनिट का this scale is a minimum efficient scale. इस स्केल पर आपकी कॉस्ट, और कॉस्ट जब हम बात करें ये है टोटल कॉस्ट, विच टोटल कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स्ड क्या हो, मिनिमम हो, क्या हो, मिनिमम हो, तो उसे मिनिमम एफिशिएंट स्केल। होप यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ मिनिमम एफिशिएंट स्केल। नाउ इफ दिस मिनिमम एफिशिएंट स्केल इज स्मॉलर, क्या है, स्मॉलर है कंपेयर टू मार्केट, कंपेयर टू मार्केट। अभी हम केक का ही एग्जांपल लेते हैं। केक की मार्केट क्या है, इज सो बिग, ओके, बट एक बेकरी क्या है, आप छोटी सी भी ला सकते हो, जस्ट मे बी मेकिंग
100 केक, ऐसी बेकरी बेकरी भी लगा सकते हो, 50 केक वाली भी लगा सकते हो, छोटी बेकरी भी लगा सकते हो। और केक की मार्केट कितनी है, मे बी इवन वन सिटी 50,000 केक एक साल में बिक जाता है। तो हाउ मेनी प्लेयर कैन एग्जिस्ट देयर, अगर हर एक बेकरी 100 बना रही है, हाउ मेनी कैन सर्वाइव, 500। अगर किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो यूनिट है वो स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, मार्केट के कंपैरिजन में, तो देयर कैन बी मैनी प्लेयर, मैनी प्लेयर कैन एग्जिस्ट। इसके अपोजिट में अगर हम कप्स देखें, एमईएस मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो है वो क्वाइट हाई है किसके कंपैरिजन में, मार्केट के कंपैरिजन में। मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग, अब कार मैन्युफैक्चरिंग को एक छोटा प्लांट तो लगा नहीं सकता कि जिसमें साल में सिर्फ 50 ही कार्स बने, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। इफ यू आर पुटिंग योर कैपेक्स, उसकी क्वांटिटी विल बी वेरी हाई। बट मार्केट जो है कार्स के लिए ऐसा नहीं है कि साल में एक शहर में आप 50,000 या 500,000 कार बेच सकते हो। एमईएस फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विल बी हाई। कोई प्लांट लगाने बैठेगा तो वो इतना तो लगाएगा कि वो साल में 20,000 कार बना या 50,000 कार बना रहा है। यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ कैपेक्स, if you need to recover this capex, the capacity of your plant need to be high। तो मार्केट के कंपैरिजन में अगर एमईएस मिनिमम एफिशिएंट स्केल बड़ा है, बड़ा मतलब आई एम नॉट सेइंग ऑब्वियसली मिनिमम एफिशिएंट स्केल कांट बी लार्जर, इट कांट बी लार्जर, बट it's like it's 100,000 and minimum efficient scale is 20,000. How many player can survive in this market? Only 5 player can be survive. डिमांड सप्लाई, डिमांड 100,000 की है, एक प्लांट लगाने के लिए कितना चाहिए, 1000 मिनिमम एफिशिएंट स्केल है, वहां पे जो है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम होगी। तो व्हाट हैपन in this type of industry only few player can exist। So that's the concept of MES। So today we learned 3 major concepts: break even point, no profit, no loss; shutdown, if you are not able to recover your variable cost, shut down your business; minimum efficient scale, एक ऐसा स्केल उतना प्रोड्यूस करो जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज minimum, that's minimum efficient scale। So hope you enjoy this session and please connect with us to learn more this type of concept every Saturday and Sunday at 1 p.m. Indian Standard Time। Thank you।